नमस्कार दोस्तों, माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ह्यूमन सेफ्टी। मैं आपसे जो कुछ भी बात करूंगा रिलेटेड टू ह्यूमन सेफ्टी बात करूंगा, बिकॉज वो मेरा सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आदमी सेफ है तो सब कुछ सही है, आदमी सेफ नहीं है तो इट्स नॉट गुड, और इट्स नॉट गुड फॉर हिज फैमिली और फैमिली। सो शुरू करता हूँ मैं एक नए टॉपिक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आई हैव प्रूव आई हैव प्रूव दिस टू मेक माय ब्रेन running successfully. It's a case of 5 year बैक, 5 to 6 year बैक। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे जो भाई बंधु मेरे साथ काम करने वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वो फेक तो नहीं है। आगे की सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पेयर ना होते हुए भी स्पेयर ना होते हुए भी हमने स्क्रीन को कैसे मात्र 150 रुपए के अंदर, आपको मजाक लग रहा होगा, बट मैं आपको शो करूंगा कि हमने स्क्रीन को मात्र 150 रुपए के अंदर रन कर दिया। क्रेन कॉस्ट एक क्रेन का कॉस्ट देखा जाए तो 250 से 300 करोड़, बट 300 करोड़ के सामने अगर मैं 120-25 रुपए बोलूं तो ये मजाक ही लगेगा। तो इसी मजाक को आगे शुरू करते हुए मैं सबसे पहले ये बताऊं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि देखिए, क्रेन में टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं। 6 ऑपरेशन में लॉन्ग ट्रेवल हम इसको बोलते हैं। देखिए, दिस इज लॉन्ग ट्रेवल, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट LT। दिस इज ऑल्सो LT। You can write forward, and this you can write reverse. Okay, and this is CT. I'm writing CT means cross travel. This direction is forward, in the opposite reverse, and this is hoist. This is main MST, main hoist. So I can say that the up is forward, down is reverse. So total 6 operations. All 6 operations depends totally depends on रेजिस्टेंस बॉक्स। सो रेजिस्टेंस बॉक्स एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, और अगर ये ना रहे तो क्रेन हमारा चलेगा ही नहीं। इफ इट गेट्स फेल्स इन एनी operations, that particular operation will get stopped entirely. Okay, so this is a case study for long travel, which we have faced 6 to 7 year back, and मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जो जो लोग इसको देख रहे हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका पाला इसे जरूर पड़ा होगा। मीन्स आई एम श्योर दे विल definitely see on this particular resistance box. I'm writing here, this is resistance box, compact type, PACT.
compact type. This is a compact type resistance box. And to run a 7.5 kilowatt motor, the value of this resistance box is 36 ohms. 36 ohms. To run a motor of 7.5 kW, 7.5 kW. Okay. So total 15 kilowatt, load of 15 kilowatt. This 36 ohms two compact resistance box are used in parallel. So what will be the final resistance value if 236 ohms are in? What will be the value? 236 ohms when are in parallel. So the short formula is simply write 36 into 36 divided by 36 plus 36. This gives you 18 ohms, right? So 36 into 36, what will be value? 1296. 1296. And 36 plus 36, 72. This gives you 18 ohms. 1296 divided by 72 will give what? 18 ohms. So I have to make a 18 ohm resistance box. I mean, I have to make 18 ohm resistance box. मुझे 12 ohm का resistance box बनाना था for a 15 kilowatt motor, and without the main thing is that I have no spare. I have no spare, but I have to make 18 ohm resistance. So मैं आपके सामने कैसे मैंने इस 18 ohm resistance box को बना के अपने क्रेन को रन किया, और as a maintenance in charge, I feel that yes, I can think out of box in any critical situation. So moving to slide number 2, see, this is the resistance box which my maintenance person pick up, picked it up, and so I've decided, मुझे लगा कि यार चलो इसको open किया जाए. So I've decided that let it be open and see what is the internal, what are the things inside this compact resistance box. So when we open, we have found that this, I mean, this is what? This is, let me give it from here. So drawing this from here. Okay. So this is filament based DBR. DBR means dynamic breaking resistance box. Filament, I mean filament type. So मुझे लगा कि यार ये जो है, ये तो ऐसा है कि जो हम लोग घर में ड्यूरिंग विंटर के समय में घर में वी आर यूजिंग रूम हीटर्स, इट इज समथिंग लाइक दैट. सो माइंड में क्लिक किया कि यार ऐसा क्या चीज है कि मैं इसको डिजाइन करूं. अब देखिए मैंने बिल्कुल स्क्रैच से चालू किया, मतलब जो कुछ भी मेरे प्लान में मिला, जो भी अवेलेबल रिसोर्स था, मैंने उसके अंदर से सोचा कि कैसे इसको डिजाइन किया जाए. सो देखिए, OEM has made this filament resistance box by using, you see, these are the white, जितना भी आप व्हाइट पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये बालू, आई मीन सैंड.
and the sand is filled, and the sand was filled inside, and this filament was put inside to you know um, dissipate the heat on this aluminum frame. This is, if I take orange color, this is aluminum frame. ये हमारा एल्यूमिनियम फ्रेम है और इस एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर ये बालू फिल्ड था और इस बालू के अंदर हमारा फिलामेंट डीबीआर फिल्ड था, राइट? सो मूविंग अहेड, ये नाउ अपने को डिजाइन करना है. सी, इन द थर्ड स्लाइड वी स्टार्टेड टू डेवलप फिलामेंट बेस्ड वेस्टर्न ब्लॉक्स. अब हमने सोचा कि भाई इसको डिजाइन किया जाए, जो होगा देखा जाएगा. सो अब देख सकते हैं कि टू मेक टू मेक इट राउंड, टू मेक दिस राउंड, we have taken a round frame structure, I mean round frame, round metal frame. We have taken a round metal frame. We have taken a round metal frame to design round type structure. Okay, now moving to next slide. So अब हमने देखिए इस इमेज में we have used, this is plaster of Paris, Plaster, plaster of Paris. ओके, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा ऐसा है कि आप इसे कहीं लगा देते हैं तो वो सूखने के बाद एक शेप में आ जाता है. बट हमें तो एक ऐसा चीज डिजाइन करना था कि वो जल्दी सूखे, और बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू हाउ इन कैसे आप कम समय में अपने किसी ब्रेकडाउन सिस्टम को जल्दी करते हैं. आई मीन लोवेस्ट मीन टाइम टू रिपेयर. सो शुरू किया हमने, तो हमको रिजल्ट नहीं मालूम था कि क्या होगा, बट एक माइंड में था कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा. एंड नाउ आई एम writing, this is step 1 and this is step 2 and this is 3. Okay, अब in step 1 we fill the plaster of Paris inside. हमने यहाँ पे इसके अंदर हमने इसके अंदर एक फिल किया प्लास्टर ऑफ पेरिस. और जब हमने इसके अंदर फिल किया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तब जाके देखिए एक ये शेप आया, राइट? दिस शेप इज कम आफ्टर putting plaster of Paris inside that metal structure. अब देखिए इन द थर्ड इमेज ये एक शेप बन के तैयार हो गया. सो हमको लगा कि ओके, नाउ वी आर इन अ राइट ट्रैक. आफ्टर आफ्टर लुकिंग द रिजल्ट, वी फील कि लगता है कि अब हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक और हम लोग बना लेंगे. वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक. देखिए
बहुत ज़्यादा ओवर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए, बट वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट इस शेप को देख के लगा कि हम डिज़ाइन कर ले जाएँगे। Looking the shape, we feel that yes, we can make it. But this is the sad part of our in-house development process. That plaster of Paris gets broken into multiple multiple parts. Okay, so this plaster of Paris gets broken into multiple parts. Now that's the sad part. But you know, when this was happened, जब ऐसा हो गया तो पेशेंस आदमी को नहीं खोना चाहिए. If you lose patience, then whatever good things come in your mind, that will also vanish. पेशेंस नहीं खोना चाहिए, राइट? फेल है तो सक्सेस भी है, एंड सक्सेस है तो फेल भी है, फेलियर भी है. सो ये टूट गया, नॉट स्पोकन, बट आई थिंक, फिर मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा चीज है जो कि टेम्परेचर को भी बियर करे, हाई टेम्परेचर को भी बियर करे, और वर्किंग वर्क परफेक्टली, परफेक्ट वर्क करे. बताइए, क्या मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ. खैर, जो लोग मेरे साथ काम किए वो तो बता पाएंगे, और जो लोग नहीं काम किए हैं मैं इनको बताता हूँ. मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इन विंटर सीजन वी यूज समथिंग इन आवर हाउस टू मेक द रूम हॉट. व्हाट इज दैट? दैट इज डोमेस्टिक हीटर, domestic blowers. So that is the main key point in this case study. This is a domestic heater oil. This is domestic heater oil which we are using in our kitchens. हम लोग kitchen में use करते हैं for making different type of foods. But the hurdle is that in my first screen, as I've told, जैसे कि मैंने आपको बताया कि I have to make 18 ohm resistance box. So how, कैसे मैं इसको 18 ohm का resistance box में, थोड़ा सोचिए आप लोग. Those who are from electrical, I think वे तुरंत सोच ले गए होंगे. But ठीक है, मुझे आपको बताना था, मुझे आपको गाइड करना था, इसलिए मैं एक 6 ईयर बैक का प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आया हूँ. देखिए, एवरी वायर हैज अ टू एंड, एवरीथिंग हैज अ टू एंड. और किसी भी चीज को दो पार्ट में काट दो, एक पार्ट का दो एंड होगा, दूसरे पार्ट का दो एंड होगा. तो यहाँ पर कितना है? Here are two domestic heater coils and the totality ends are 4. Okay, so the same concept, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 36 बनाया और इसको भी 36 बना दिया. ठीक है, और जब 36 ओम्स को मैंने बना दिया, 36 ओम्स इस हीटर कॉइल को मैंने बना दिया, और जब हम पैरेलल में से कनेक्ट करेंगे, then this will give, when you connect in parallel,
CO double NEC connect in parallel. This will give 18 ohms. यही हमको चाहिए था. जैसे ही हमने इसको 18 ohms कनेक्ट किया, अब देखिए 18 ohms से बन गया. लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक हर्डल ये है कि ये एक हीटिंग एलिमेंट है, और किसी भी हीटिंग एलिमेंट को आप डायरेक्टली किसी मेटल पर प्लेस नहीं कर सकते. जब मेटल पे आप प्लेस नहीं कर सकते हैं तो क्या हम किस पे हम रखें? अब देखिए, एक दूसरा थिंक आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट. थिंक आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट में हमारा एक ऐसा मटेरियल सोचा हमने कि जो हाई हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है. सो हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने वाला कौन सा मटेरियल है? बहुत सारा आइटम है. इजिली अवेलेबल क्या है? व्हाट इज इजिली अवेलेबल इन द मार्केट? इजिली अवेलेबल मार्केट में वो है, को बोलूंगा तो हंसी आएगा. दिस इज टी कप. TCUP. टी कप मीन्स चाय का प्याला, जिसमें आप चाय पीते हैं ना. दैट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर बेयरिंग मटेरियल. वेरी हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं. बस, these are the two major components for this case study. Number one, taking another number one is heater coil. Number two, pickups. Pickups. और इन्हीं दोनों ने मिलके मुझे these two ingredients or these two components resolve the breakdown when we have no spare. नो स्पेयर कंडीशन में हमने ये दो कंपोनेंट से हमने अपने ब्रेन कैविटी मूवमेंट ऑपरेशन को रनिंग कर दिया. एंड जैसा कि मैंने कहा कि 300 करोड़ के ब्रेन को if we compare with this, and cost of this project is 125 एन 125 रुपए में हमने इस केस स्टडी को रिजॉल्व कर दिया. एंड सी देखिए, आपको देखने में लग रहा हो कि इट इज नॉन स्टैंडर्ड, एंड फ्रॉम सेफ्टी एस्पेक्ट से भी आपको लग रहा हो कि नहीं भाई ये तो ओपन है. यस, you are okay. If you are thinking, you are okay. But I have used a insulator. Porcelain act as insulator. ये कप मैंने इसलिए लिया है कि ये जो हमारा हीटर वाला कॉइल है वो कंडक्टिव मटेरियल टच नहीं कर पाए. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड insulator. एंड सी, एक बार रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि हम उसको मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे. इसमें बहुत सारा स्कोप है. आप इसको, इफ यू हैव टाइम, देन यू कैन मेक इट एज अ मैन्युफैक्चरिंग, आई मीन
On a commercial point of view, you can make this, right? So मुझे लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन में अगर हम थिंक आउट ऑफ बॉक्स अपने सोचें, थिंक आउट ऑफ बॉक्स टाइप का चीज़ अगर हम सोचें तो ज़रूर आई एम श्योर कि हम किसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ मैं इसको अगर इंडस्ट्रियल ह्यूमन सेफ्टी से कंपेयर करूँ, तो देखिए कोई भी फेलियर होने से पहले सिस्टम ऑलवेज गिव इंडिकेशन। सिस्टम हमें इंडिकेशन देता है, बट दैट इंडिकेशन to be reached to the maintenance people with some automation. So that is the gap. And in in coming my videos, I will I will tell you that how system based information, कैसे एक सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे मेंटेनेंस पीपल पास जाएगा तो हम किसी भी फेलियर होने से पहले हम उस चीज को स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज अ दैट इज अ ऑटोमेशन पार्ट, मैं आपको बताऊंगा कमिंग वीडियोस में। एंड एक लास्ट में एक स्लाइड और है जो विल आस्क यू, आप अपने लाइफ में इन 4 आइडिया देखिए, सी आइडियाज आर मेनी, इंटरनेट हैज इनफाइनाइट मोटिवेशनल पॉइंट्स, motivational quotes. So I have searched and I've taken 4. It could be 400, it could be 4,000, it could be any number. But मुझे लगता है कि if I ask you, like, if this is number 1, this is number 2, just a minute, for taking one more color, I'm taking a yellow color. So okay, now this is 1, this is 2, this is 3, and this is mm, this is 4. इन 4 आइडिया में it is the best motivational quote in current atmosphere. I mean, in current scenario, in current industry culture, कौन सा है? बताइए आप सोच के। आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। सी देखिए, एक वीडियो बनाने में एक समय लगता है, एंड if you motivate me, if you motivate me with a single uh, with a single hands up, it's a single thumbs up, then it motivates me to create more and more for you. आप थोड़ा सा मोटिवेट होइए, मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आप ये सोचेंगे कि यार अगला वीडियो कब आए। मेरे हिसाब से तो आज के करंट सिचुएशन में आई एम with this with this I am with this I am with I'm with this number 4. Why? Because starting with starting with the lower one, फिर जो स्मॉल माइंड्स होते हैं ना, स्मॉल माइंड्स पीपल डिस्कस अबाउट पीपल, अरे वो तो ऐसा था, अरे वो तो ऐसा बोल रहा था, राइट? लेकिन जो एवरेज माइंड होते हैं, दे टॉक अबाउट इवेंट्स। आज ऐसा हुआ, आज वहां पर ऐसा हुआ, आज उसके वहां ऐसा हुआ था,
लेकिन जो ग्रेट माइंड पीपल होते हैं ना, दे विल ऑलवेज डिस्कस अबाउट आइडियाज, न्यू आइडियाज, जो कि विच इज माय फेवरेट। जो आदमी आपको आइडिया दे, एक पॉजिटिव आइडिया, देखिए आइडिया ही बहुत सारा होता है, लेकिन ऐसा आइडिया जो आपको लगे कि यस, ये बहुत इज टेलिंग राइट एंड आई हैव टू थिंक ऑन इट। सो मेरे हिसाब से तो 4 नंबर है, बाकी आप लोग का बहुत कुछ भी और ओपिनियन डिसीजन हो सकता है। आई एम विद नंबर 4 एंड आई लिव विद आइडियाज, आई लिव विद आइडियाज। I have lot many ideas in my mind, and I will definitely share what ideas I have. These ideas motivates me because I always think I always think out of box type of things. लोगों को लगा अरे ये तो फालतू का बोल रहा है और बकवास है इसका आइडिया। So I never mind what people are saying. So इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और कुछ अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू। फिर मैं एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। थैंक यू। नमस्कार। स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। थैंक्स।